नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष, जो कि आपके सामने आज इस टॉपिक पे डिस्कस करना आया है। और टॉपिक है कि भैया आईआईटी है या एमआईटी, कौन सा बेटर है, विच इज बेटर एंड वेयर यू शुड गो। अब देखो, ये ऑब्वियसली टॉपिक सबके लिए शायद रेलेवेंट नहीं हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बच्चा आईआईटी और एमआईटी दोनों जगह के लिए एलिजिबल होगा उस बच्चे के लिए ये वैलिड होगा टॉपिक। बट स्टिल, अगर आप आज एलिजिबल हैं कि नहीं है ये नहीं पता, बट शायद कल को तो एलिजिबल होंगे। कल को तो आपकी इतनी काबिलियत होगी कि आप आईआईटी और एमआईटी दोनों जगह अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप चुन रहे हैं कि आज मेरे को कहां जाना चाहिए। तो हेंस ये वीडियो आपके उस वक्त के लिए आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा कि आपको कहां जाना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन दो न्यूज आर्टिकल से। ध्यान से सुनिएगा। न्यूज आर्टिकल ये कहता है, साल 2024 का ये न्यूज आर्टिकल है कि रघु महाजन द जेई टॉपर हु ड्रॉप्ड आउट ऑफ आईआईटी दिल्ली टू इनरोल एट एमआईटी। एमआईटी इनरोल करने के लिए एमआईटी में बच्चा गया, एडमिशन दिया, आईआईटी दिल्ली में इसका सिलेक्शन हो गया था, बट इसने आईआईटी छोड़ दिया। साल 2024 का ये न्यूज है। साल 2023 का न्यूज देखिए, ऑल इंडिया रैंक 99, जो बच्चा 99 लेकर आया था, चूजेस एमआईटी ओवर आईआईटी। इस बच्चे को भी आईआईटी आराम से कंप्यूटर साइंस का मिल जाता, लेकिन ये बच्चा एमआईटी चुना। क्यों? क्योंकि इसको रिसर्च अपॉर्चुनिटीज वहां पे ज्यादा बेहतर समझ आ रही थी। उसके बाद ये तीसरा न्यूज साल 2020 का है। जे एडवांस टॉपर चिराग फेलोर चोजेस एमआईटी ओवर आईआईटी। चिराग फेलोर भी एमआईटी का चयन करता है आईआईटी को छोड़कर। अब आपको ये बता दूं, ये सारे बच्चे वो बच्चे हैं जिनको आईआईटी बहुत आराम से मिल जाता, आईआईटी में कंप्यूटर साइंस या फिर जो भी ब्रांच इनको चाहिए था वो मिल जाता, बट इसके बावजूद इन बच्चों ने आईआईटी छोड़कर एमआईटी चुना। अब कारण क्या है? तो कारण कहीं ना कहीं ये एक एस्पिरेशनल वैल्यू है जो अधिकांश बच्चों के अंदर रहती है कि भाई आईआईटी ज्यादा बेहतर एमआईटीज हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा एंड ऑल सच स्टफ। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वो सारे पॉइंटर्स बताने वाला हूं और दोनों का एक बहुत लॉजिकल कंपैरिजन करने वाला हूं कि दोनों जगहों पर क्या अच्छा है क्या बुरा है, और इमोशन से ऊपर उठकर थोड़े लॉजिकल पॉइंट्स पर बातें करेंगे कि अगर कल को आप इस परिस्थिति में पड़ते हैं तो आपको क्या फैसला लेना चाहिए, आपको आईआईटी जाना चाहिए या फिर एमआईटी जाना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है आपके लिए। चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर दीजिए, बिकॉज यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ ब्यूटीफुल कंटेंट हियर विच इज गोइंग टू पेव योर पाथ इन द कमिंग डेज। ठीक है, हियर वी गो। तो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन पे कंपेयर कर लेते हैं। आईआईटी इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया है। वी हैव गॉट 23 IITs अक्रॉस इंडिया एंड फाउंडेड इन 1950 द फर्स्ट आईआईटी. Now, MIT is Massachusetts Institute of Technology. This is a private university. You might be astonished to know, but this is a private university located in Cambridge, USA. That is the place. Founded in 1861. So, three things are different. First, that this is a private university. Here, it is a government university. Second, that it is only one college having multiple buildings or multiple departments in the college, but university or college is only one. Here we have got 23 different IITs. Third, that it has been founded in 1861. This has been founded in 1950. So almost 90 years older is this college. This is the basic information comparison. Next is that IIT Bombay has got a QS World ranking of 118, being the best IIT Bombay. Second is IIT Delhi 150, and then 263, 271 and 227. But QS World ranking MIT is ranked at 1. Number 1 in the entire world. It is the best university according to QS World rankings. So this is a major differentiator. Next is that IIT has got 1.2% of selection ratio. Why am I saying this? Because we have got 14.76 lakhs application in the year 2025. Sorry. Now, out of this 2025 14,76,000 applications, we have got 17,740 seats in IITs, combining all 23 IITs. Now, if I talk about MIT, MIT has got a 4.5% selection ratio because it has got 28,000 applications, far less compared to applications which are received in Indian Institute of Technology. It has got 28,000 applications across the world, and out of those 28,000 applications, 1,284 students have been selected, and that makes its selection percentages around 4.5%. So there could be two different things. That first, MIT could be easier to go, or otherwise that there must be it might be very very tough, so tough that most of the people don't even choose to apply to MIT. These two can, मतलब यही दो कारण हो सकते हैं ना कि भाई या तो MIT इतना टफ है
कि वहां पे कोई अप्लाई ही नहीं कर रहा, हेंस एप्लीकेशंस आर वेरी लेस। या फिर ये हो सकता है कि भाई वहां पर जाना इतना सिंपल है कि बस इतने ही एप्लीकेशंस आ रहे हैं और उसमें से भी 4.5% स्टूडेंट्स आर गेटिंग सेलेक्टेड। नाउ from which angle you are seeing it, I don't know, but I would like to put my angle. One thing is very sure that going to MIT is not at all easy, not even close to easy. So going to MIT is very tough and people across the world do understand this. Therefore MIT में एप्लीकेशंस हर साल बहुत कम आते हैं, लिमिटेड एप्लीकेशंस आते हैं, बिकॉज पीपल नो कि MIT में इतने आसानी से सिलेक्शन नहीं होगा, हेंस वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल डू अप्लाई हियर, एंड दैट इज व्हाई out of this 1284, even if they get selected, that makes the selection percentage pretty better. But here in India, most of the people do have an aspirational value for IIT and hence the applications are very high. Fine. Next is that in IIT-JEE selection, so JEE examination is conducted for IIT. Ab ye JEE examination is conducted in two phases. First is JEE mains examination. Second is that once the student clears JEE mains examination, so every year 2.5 lakh students clear JEE mains examination. This 2.5 lakh students are allowed to go for JEE advanced examination. They are allowed to appear in this examination. Rest, so 14.76 lakh students appeared for JEE mains. In this 14.76, 2.5 lakh students were able to clear a cutoff, and these 2.5 lakhs were allowed to write an examination which is called JEE advanced. And out of in this JEE advanced, whosoever will be able to clear this examination will be able to get into IIT. That is how it works out. And there is one more criteria, that in your 12th board examinations you need to have 75% marks minimum in aggregate to be eligible to get into IITs. Now if I talk about MIT, here there is no specific criteria. No specific criteria on minimum high school scores or even applicants expected a board to pursue a board and rigorous academics. So basically they don't have any criteria either for school or for marks or for grades for anything. No minimum marks for even application, or so basically they do take examination which is called as SAT. Based on this SAT score they do take admission, but on their website they have not mentioned any minimum marks criteria that on this minimum marks I will be taking admission. But a kind of established fact is that SAT is an examination which is of 1600 marks. Out of this 1600, in past years MIT have selected students who have got minimum more than 1520. So this makes MIT also equally difficult, because in an examination of 1600 marks someone getting 1520 is something which is very high score and not so easily achievable. So although they have not mentioned anything on their website, but out of the 1600 they must get 1520, 1550. This is the minimum which I am saying, although most of the people who get admitted here are above 1550 or 1560, 70, something of that sort. Although and that is why this entire process is quite rigorous. In fact, it's not that simple that just like in India people do write an examination and they clear the examination, they are into the system. But here you'll have to clear an examination, thereafter you have to prepare your resume, thereafter you have to prepare your statement of purpose, thereafter you have to prepare your essay, and all such things are evaluated. So evaluation process is quite rigorous. Okay, that's not easy. Next is that here you need to clear only JEE advanced examination, then you need to sit for counseling. If you get the seat, whosoever has done good in examination will get the seat. But here on the contrary, in MITs, they do check you for your English proficiency also, IELTS examination. They do check you for SAT scores also, which range from 1520 to 1580. And out of all of them, thereafter they even check your school grades. Although they don't say that we have a minimum criteria, but your school grades, if they are not so good, they won't be accepting you. Apart from that school grades, they even do check for your co-curricular activities. So CCA is a very important part in MIT admission process, co-curricular activities. Post that, if you do both of things well, then your statement of purpose would be checked, and then your recommendations would be checked, and then your essay would be also checked. So they have a quite rigorous long list of checking which they do before taking admission. Now moving forward, IIT is termed as, or IIT examination, JEE examination, advanced examination, is termed as the toughest examination second toughest examination in the entire world. The toughest one in the entire world, the most toughest examination in the entire world is Guangzhou
Guangzhou is an examination conducted in China for admissions to Chinese university, which is very famous in China, just like JEE in India. So in India, JEE Advanced is there, and in the entire world, JEE Advanced examination is called as the second toughest examination in the entire world. But that is not the case in MIT. In MIT, it's profile evaluation, which in some terms looks very tough to most of the people, but there is no such ranking as such which can term that MIT has got the toughest evaluation process or the selection process, because they don't have a written or a quite defined way of evaluation. They have a very subjective way of evaluation, and hence it cannot be ranked in anywhere in the entire world. Okay, so they have an evaluation process which is not so well defined, and they do take calls based on case to case. Okay, now next is IIT. So if you have to study in IIT, the cost of living, which is the hostel fees in IIT generally, is somewhere around 26,000 to 67,000 rupees per year, depending on different IITs. But in MIT, you have somewhere around 11 lakh rupees per year. So although USA is quite expensive place, so the cost of living is according to the country. Here you have got somewhere around 60,000 max, you can say. Here you 60 to 70,000. Here you have got 11 lakh rupees for the cost of living. Next is the cost of education. In India, it's 2 lakh rupees to 3 lakh rupees per year. Minimum 2 lakh rupees or 2.2 lakh rupees to 3 lakh rupees per year. Here in MIT, the fees is 52 to 53 lakh rupees per year. Quite high, again, according to the cost of living or the cost of fees in USA. Next is, in IITs, we do have scholarships. So any student who has cleared IIT, but his family income is less than 1 lakh rupees per annum. Any student whose family income is less than half. So this is 1 lakh rupees, and the fees for per annum is around 2.26 lakh rupees. So lesser than the half of the fees of IIT per annum. Any student who has got family income of lesser than 1 lakh rupees need to pay actually nothing, 100% tuition fees waiver. So this is the rule in IIT, and this is irrespective of the caste. General EWS, everyone will get this. Any student whose family income is between 1 lakh rupees to 5 lakh rupees, which is almost 2 times the cost of education at IIT, like 2 years cost. Anyone who is getting lesser than 2 years cost of IIT would be getting 2/3 tuition fees waiver. Means if the cost, if the tuition fees is 2,40,000 for 1 year, they will have to pay only 80,000 rupees. 1/3 of the price they will have to pay, rest would be waived off. This is again irrespective of the caste. Now anyone who is a SC/ST caste, will get a completely free education in IITs. This is the rule for IIT's scholarship. Now if we talk about MIT, in MIT, they have a stat mentioned on their website that 58% of MIT undergraduates received an MIT scholarship. In some or other form, they have received something. Now, what do they say? That mostly people do receive somewhere around 56 to 57 lakh rupees as a scholarship. Now, this scholarship and the price is 53 lakh rupees. So, first of all, that they offer zero fees to those families whose annual income is lesser than 85 lakh rupees. Lesser than 85 lakh rupees. So they have a fees of 52 lakh rupees. Anyone who is earning lesser than 85 lakh rupees per annum will be getting a zero fees. Here in India, we have a zero fees for the cost of education, half of this. So we have got 1 lakh rupees lesser than this will get a free education. Here on the contrary, they have got double of this, like almost double, 1.5x you can say, that the cost of education is 52 lakh. Anyone who has got a salary or income of lesser than 85 lakh rupees will get a zero fee. So here also we have scholarship systems. Now moving forward, here this is an dismal situation, or you can say ये थोड़ा सा ऐसा है जो थोड़ा गड़बड़ है. यहाँ पर डोमेस्टिक में 99% बच्चे इंडियन हैं. IITs में डोमेस्टिक बच्चे 99% हैं इंडियंस. इंटरनेशनल स्टूडेंट इज जस्ट 1%, बट MIT में ये बिल्कुल अलग है. Domestic students are 67%, international students are 33%. मतलब 1/3 of MIT is international. और ये बहुत बड़ी बात है, because if you do get international population, आपको दूसरे देश, दूसरे कल्चर्स के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, तो आपका विजन बहुत खुलता है. It's quite open. And second most important thing, that your fear of international crowd and international people and the apprehensions about them, ये काफी हद तक क्लियर हो जाता है. तो आपका एक तो थॉट प्रोसेस ओपन हुआ,
दूसरे आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, आप बहुत सारे नई चीजों को सीखते हो, तो इंटरनेशनल क्राउड इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी कॉलेज में होता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, English is often the medium of instruction in IITs also, because in IITs students are mostly from across the country. So India में बहुत सारे, we have a lot of different languages, so people generally conversate there in English. Similar thing happens in MIT because most of the people are coming from different parts of the world, and even in USA the common mode of instruction or common mode of conversation is English. Now tuition fees for IITs for all 4 years is around 9 to 12 lakh rupees. Now here in MIT it's approximately 2 crore rupees because 52 lakh rupees was the per year fees. Now here cost of living is around 1 lakh to 3 lakh rupees for 4 years. Here the cost of living would be somewhere around 45 lakh rupees for 4 years. Now here the average salary after graduation would be 12 lakh to 20 lakh rupees per annum. This is the average salary for IITs. Now if you compare, your tuition fees was 9 to 12 lakh rupees. So the per year cost is around 2 lakh rupees, 2.5 lakh you can say. 2.5 lakh rupees is somewhat an IIT charges. On 2.5 lakh rupees, they are giving you 12 lakh rupees. So this is roughly 5 times of your what you are paying. You're paying 2.5 lakh rupees. 5 times of this is your average minimum payout. Now here that does not happen in MIT. MIT, if it takes you 2 crore rupees, although they also have a free education policy, here also you have a free education policy. So if you fall in the free education policy, then MIT becomes better. But if you don't fall in that and you have got a 2 crore rupees of tuition fees, after that they have an average salary of around 90 lakh rupees. So 2 crore rupees fees means you will have to pay 50 lakh rupees per annum. In 50 lakh rupees per annum, you are getting 90 lakh rupees per annum as the salary. So that is nearly 2 times, somewhere around 1.8 times. So this is nearly equal to 2x. This is nearly equal to 5x of your return on investment. So on this criteria, return on investment in IITs are better. But having said that, what I said earlier, कि IITs में return on investment देखोगे तब अगर तुम फीस दे रहे हो और तुमको क्या पैसा मिल रहा है। चूंकि इंडिया में मेजॉरिटी बच्चा फीस देकर पढ़ता है, बिकॉज ये जो कंडीशन है ना कि फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख, दिस इज वेरी लेस इन इंडिया। मतलब 1 लाख रुपीस पर एनम बहुत गरीब जो होता है बच्चा उसी का होता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पीपल डू हैव अ सैलरी ऑफ और इनकम ऑफ अबव 1 लाख, तो हेंस दे विल हैव टू पे समथिंग। तो यहां पर स्टूडेंट डू पे समथिंग, बट यहां पर सिंस अकॉर्डिंग टू इंडियन टर्म्स 85 लाख रुपीज इज समथिंग विच मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिली डू नॉट अर्न। 85 लाख बहुत ज्यादा होता है, तो चूंकि 85 लाख रुपए कोई कमाता ही नहीं है, तो यहां पे मोस्टली स्टूडेंट वुड बी स्टडिंग फ्री। अगर आप एक बार इसको फ्री कर देते हो, देन undoubtedly this becomes a very good option, because 90 lakh rupees is nowhere near to 12 and 20 lakh rupees, काफी डिफरेंट है। तो उस हिसाब से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसका बेटर है, अदरवाइज IITs का बेटर है। अलाइंग मेनी स्टूडेंट्स टू कवर देयर एजुकेशन कॉस्ट, तो यहां पे भी एक साल अगर पैसे के हिसाब से देखो तो एजुकेशन कॉस्ट तो बहुत आसानी से निकल जाता है। नेक्स्ट इज वर्क पार्ट टाइम। इंडिया में पार्ट टाइम वर्किंग का कल्चर ज्यादा नहीं है। इट्स नॉट सो कॉमन इन इंडिया दैट पीपल और स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेजेस डू वर्क पार्ट टाइम, apart from the until unless they have acute necessity or they can get into some home tuition, something of that sort, तो वो चलता है, but not on a professional level। तो इंडिया में पार्ट टाइम वर्किंग अपॉर्चुनिटीज आर लेस एंड हेंस पीपल डू अर्न 5,000 to 10,000 रुपीज पर मंथ, दैट मेक्स रफली अराउंड 1 लाख रुपीज मैक्स टू मैक्स इन अ ईयर। तो इन अ ईयर 1 लाख रुपीज मैक्स टू मैक्स, in that you would be able to cover your living expense. On the other hand, in USA this is very common that students do work while they are studying to cover their own pocket money expenses. तो वहां पर आपका जो मैनेजिंग लिविंग एक्सपेंसेस है, तो एवरेज पार्ट टाइम वर्किंग अपॉर्चुनिटी इज गुड देयर। यू कैन अर्न समवेयर अराउंड 8 lakh rupees to 12 lakh rupees, and this much amount you would be needing for the cost of living also। तो वहां पे भी कॉस्ट ऑफ लिविंग जितना है उसके आसपास तुमको पे आउट मिल जाता है। इंडिया में थोड़ा कॉस्ट ऑफ लिविंग से ज्यादा पे आउट मिल जाता है, बिकॉज IITs में जो हॉस्टल का खर्च है वो थोड़ा कम होता है, तो आपको पे आउट थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, ऑल्दो इंडिया में कल्चर थोड़ा कम है। ठीक है, हाँ, अगर कोई तेज बच्चा है तो वो ज्यादा पैसा कमा सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के। चलो आगे बढ़ते हैं। IITs have dedicated team and officers to help students with placement। इंडिया में चूंकि प्लेसमेंट का कल्चर है एंड हेंस कॉलेजेस डू हेल्प स्टूडेंट गेटिंग प्लेस्ड, और यहां पर अगर कहीं इंटर्नशिप लगता है तो उसके लिए आप इंटर्नशिप अगर कहीं लगा तो वो कंपनी या तो आपको पे करती है इंटर्नशिप का या नहीं पे करती है, बट IITs डू नॉट पे फॉर एनी इंटर्नशिप।
आईआईटीज ना ही आपको स्टाइपेंड देगा ना ही ट्रैवल सपोर्ट देगा। आपका इंटर्नशिप जिस कंपनी में लगा है वो कंपनी आपको दे सकती है। बट यहां पर एमआईटी में कल्चर अलग है। यहां पर क्या है कि इंटर्नशिप्स जो जनरली होते हैं, पहला तो यहां पे प्लेसमेंट का कोई सिस्टम नहीं है। तो आपको ये अगर नहीं पता हो तो बता दूं, मेजॉरिटी इंटरनेशनल कॉलेजेस में दे डू नॉट हैव अ प्लेसमेंट सेल, क्योंकि इंटरनेशनल कॉलेजेस में ये सिस्टम नहीं चलता कि कॉलेज आपको सपोर्ट करेगा प्लेसमेंट लेने में। कॉलेज सपोर्ट करता है आपके नॉलेज में, आपका एक्सपीरियंस में, आपके इंटर्नशिप्स में, बट उसके बाद आपकी नौकरी लगाने की जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है। यू विल हैव टू राइट योर रिज्यूम, हंट फॉर जॉब, पुट एप्लीकेशंस, गो फॉर इंटरव्यू, और वैसे करके जॉब लगता है। वहां पे सपोर्ट कॉलेज के साइड से, कॉलेज ने कंपनी बुला ली, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट इज यू अप्लाई थ्रू MSIT's पोर्टल, हो गया। हाँ, उसके बाद यहां पर वंस यू सिक्योर एन इंटर्नशिप, दे हैंडल हाउसिंग, ट्रैवल, वीजा एंड स्टाइपेंड, सो यू कैन फोकस ऑन योर वर्क। MITs में ये होता है कि अगर आपका इंटर्नशिप किसी कंपनी में लगा तो भी आपको MIT पूरा का पूरा हाउसिंग, ट्रैवल, वीजा, स्टाइपेंड सब कुछ MIT देगा। कंपनी दे रहा है नहीं दे रहा है वो अलग बात है, हो सकता है कंपनी भी दे, बट MIT भी साथ ही साथ आपको ये सारी चीजें देगा। तो ये थोड़ा सा कल्चर डिफरेंस है, वहां कुछ और होता है, यहां पर कुछ और होता है। नेक्स्ट, IIT का आपका पोस्ट स्टडी अपॉर्चुनिटीज, जैसे मैंने बताया, एवरेज 12 से 20 लाख, यहां पर कुछ 90 लाख से 1 करोड़ रुपए के आसपास होता है। तो वो तो ठीक है, वो इंसान की काबिलियत पे भी डिपेंड करता है। फाइन, तो दैट वाज ऑल द पॉइंटर्स दैट आई कुड हैव कवर्ड। मैंने कोशिश किया है कि मेजॉरिटी पॉइंटर्स आपको कवर करके बता दूं, बट स्टिल सम पॉइंटर्स वुड हैव बीन लेफ्ट, सो वेरी सॉरी फॉर दैट। अगर आपको कुछ ऐसा पॉइंटर लगता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और आपको अगर MIT में जाने के लिए कोई हेल्प चाहिए तो यू कैन फिल आउट दिस गूगल फॉर्म। आई वुड बी लाइक, माई टीम वुड बी वेरी हैप्पी हेल्पिंग यू, ठीक है। एंड इफ यू नीड एनी अदर फर्दर वीडियो, वो भी मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। होप टू सी यू सून अगेन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।